हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा सेट थ्योरी में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स की। आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ एनसीईआरटी की आपकी एक आध प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सरसाइज में होगी एंड फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम आरडी शर्मा मैथमेटिक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, पिछले वीडियो में मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी, अमॉन्ग दीज प्रॉपर्टीज a very important property was a minus b equal to a intersection b complement. A minus b is a intersection complement of b. उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो रिलेटेड टू दोज few problems will be discussed. एक प्रॉब्लम सबसे पहले ले रहा हूं मैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन इज प्रूव दैट a माइनस b यूनियन c इक्वल टू a माइनस b intersection a minus c. So as we know, in all such problems where you are going to prove, we take left hand side and come to the conclusion a minus b union c. Taking this, that can be written as, using this identity, a minus b is a intersection complement of b. So this can be written as a intersection b union c complement. A minus b is a intersection b union c complement. Now as we know that b union c complement is complement of b or intersection complement of c. What is this? This is De Morgan's law, intersection, and that is a intersection b complement intersection a intersection c complement. This is De Morgan's law. So the identity which you are using, that you mention at that particular step, it will be more graceful for your solution. Like I have written this, तो यहाँ पर ये आप प्रॉपर्टी इस तरह से लिख दें, using identity a minus b is a intersection complement of b. यहाँ पर इसके बाद ब्रैकेट में लिख दें De Morgan's law. What a intersection b dash is? A minus b intersection a minus c. That is right hand side. अब देखते हैं और इसी से रिलेटेड a few more questions, like a intersection a dash union b equal to a intersection b. This to prove. Another question, एक बार में दो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं. a union b minus b, it is a union b minus b equal to a minus b. Again taking left hand side of this, it is a intersection a dash union b. Now a intersection a dash union b, as we know, distributive law is applicable. So it is a intersection a dash union a intersection using distributive law. तो यहां लिख देंगे using distributive law. Now what a intersection a complement is? A intersection a complement will be phi. A and a complement union
A intersection B. Now phi union A intersection B will give you A intersection B, and that is right hand side. Now similarly in this, taking left hand side, it is A union B minus B. A union B minus B. Using the identity A minus B, what is in place of A? It is A union B, and in place of B, B as it is. In place of A, it is A union B. So A minus B as it is A intersection complement of B. तो उसी हिसाब से हम यहाँ लिख देंगे what is A? A is A union B और intersection B complement. A union B intersection B complement. Now we can use distributive log A. Distributive log के अकॉर्डिंग भाई क्या बनेगा ये? It will be A intersection B dash union B intersection B dash. तो A intersection B dash, A intersection B dash is A minus B again. Union B intersection B dash phi. So it gives you A minus B, that is right hand side. So if the identities are known to us, अगर हमें अच्छी तरह से अपना जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स लॉ और ये, इस तरह के क्वेश्चन रिलेटेड बड़े इजीली हो जाएंगे. देखें एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड. Question is A intersection A union B. अब ये क्वेश्चन है, ये ले रहा हूं मैं आपके RD शर्मा मैथमेटिक्स से. A intersection A union B complement is phi. Another question, A minus A minus B. Good question. A minus B is A intersection B. Taking left hand side, it is A intersection A union B complement. अब A union B complement, as we know by De Morgan's law, it will be A intersection. अब A union B dash, A union B dash को क्या लिखेंगे हम? A dash और intersection B dash. A union B complement is A complement intersection B complement, which can be written as A intersection A complement or intersection A intersection B complement. A intersection A complement phi intersection A intersection B complement. We can write A minus B or keep it this A intersection B complement because we are finding the intersection with phi. तो इसलिए phi का किसी के साथ भी intersection हो क्या आएगा? phi. phi का किसी भी सेट के साथ यूनियन हो तो क्या आएगा? that set A union phi will give you A. A intersection phi will give you phi. तो इसलिए phi का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन हो, चाहे ये लिखा रहने दें चाहे चेंज करके ये लिख लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा. अब ये क्वेश्चन आता है, देखो A minus B. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A minus B. That is A minus. Again A minus B is A intersection B naught. A minus A intersection B dash, A intersection B complement. अब देखो इसमें फिर से A minus B बन रहा है. A minus B, A minus B, A minus, we will write A intersection B dash dash. That is A minus B. तो A intersection B dash dash. ये बन गया A intersection using De Morgan's law. In this it is
A complement intersection B complement complement. This will be union. According to De Morgan's law, A intersection B dash is A dash union B dash. It is A intersection A dash union B complement complement is B again. Now using distributive law, so it will be A intersection A complement union A intersection B. A intersection A complement, again as we have written in earlier questions also, जानते भी हैं, it will be phi union A intersection B. अब phi का किसी नल सेट का किसी भी सेट के साथ में यूनियन अगर करते हैं तो सेम सेट रहता है, इंटरसेक्शन में phi आता है, it will be A union B, and that is the right answer. So these questions are very important, and few more problems are also there that you can solve. अब इस तरह की प्रॉब्लम जो है अपना एनसीईआरटी में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक दो प्रॉब्लम्स इस तरह की मिल जाएंगी. अदरवाइज यू टेक एनी रिफ्रेशर बुक एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर रिलेटेड टू दिस. देखिए एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, एक और क्वेश्चन लेते हैं. बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये. A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B, यूनियन A इंटरसेक्शन B, दैट इज इक्वल्स टू A. ऐसा प्रूव करना. A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B. अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, that is A minus B union A intersection B. What A minus B is? A intersection B complement union A intersection B. Now as we know in distributive law, suppose it is given that A intersection B union C, it will be A intersection B union A intersection C. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो इस तरह से इसको बोलते हैं कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन. तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. जो भी लॉ है वो इन बोथ वेज इट इज ट्रू. दिस कैन बी रिटन एज दिस, और इफ एक्सप्रेशन इज लाइक गिवन लाइक दिस, देन इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. तो देखो ये इस तरह का ही अपने पास बन रहा है. ए इंटरसेक्शन बी union A intersection C. It will give you A intersection B dash union B. So it will be A intersection, now B dash union B, कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल सेट. और A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज A. तो जो भी प्रॉपर्टीज पिछले वीडियो में मैंने जो भी प्रॉपर्टीज दिखाई थी वो सारी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज हो रही है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, दैट इज द राइट आंसर. ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स लॉ, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इन क्वेश्चंस में यूज हुई. तो इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स करेंगे, और इसके अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी इन सॉल्विंग दी वर्ड प्रॉब्लम्स, और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे. सो टू गेट द वीडियोज ऑन टाइम, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.